सो सबसे पहले अपना एडिटर खोल लेते हैं और जैम्प में PHP एंड MySQL स्टार्ट करेंगे. इट्स टेकिंग टाइम. ओके, अपाची और MySQL को हम दोनों ने स्टार्ट कर देना है. देन let's create a new file here and one here and just write HTML. Let me save this file into my htdocs folders under XAMPP. Where was the register? Yep. So I will name this index.php. Then index.php, let's write HTML. Title will be register. Let's create a heading and close this one. Okay, and I will write here registration form. Let's open our browser and check this out. What we have to do, we already start the XAMPP and localhost / our folder name, and we have created as index.php, so don't need to write index.php, just enter. Oops, that was register. I forgot the name, sorry. Okay, registration form. Okay, so now what we have to do, we have to create a form and let's create one input. Type is equal to text and placeholder क्या करता है, placeholder वैल्यू दिखाता है हमको जो हम यूज़र को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एंटर क्या करना है. चलो आपको लेट मी शो यू. सपोज आई हैव टू टेक ईमेल ऑफ द यूज़र नेम, सॉरी यूज़र क्या होगा. सो ये जो ईमेल लिखा हुआ आ रहा है इसका आप टाइप कर सकते हो सिंपली. इसको प्लेस होल्डर का काम सिर्फ यही होता है. तो वी हैव क्रिएटेड दिस ईमेल एंड वी वांट पासवर्ड. एंड प्लेस होल्डर होगा पासवर्ड. सो ये रहा ईमेल, ये रहा पासवर्ड. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू create a button that will submit the form. So input type is equal to submit and value is equal to register. So we have created the 3 input tags where first one is email and the second one is password and another one is submit. So when we write input type text and place, that will करेगा क्या किया, ये input type text की वैल्यूज़ लेगा. लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ email, so अगर मैं email पे @ वगैरह कुछ मेंशन नहीं करता हूँ और रजिस्टर करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या बोलता है, सी प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस. सो इनपुट टाइप ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट हमें ईमेल एंटर करने की रिक्वायरमेंट देता है. सो वी हैव डन दिस. लेट्स क्रिएट आवर फॉर्म अट्रैक्टिव. सो let's save this file and name it as style.css and include that file under your head section and link rel style seed href is equal to style.css.
तो अब हम जो भी CSS एंटर करेंगे अपनी style.css में, वो जाके सीधे कहाँ जाएगी, index.php में. So what we have to do, let's create a div tag एंड इस फॉर्म को पूरा एक div के अंदर डाल देते हैं एंड इसकी क्लास देते हैं फॉर्म सेव डॉट फॉर्म. ऑलवेज हमेशा याद रखना कि जो भी हम अगर क्लास दे रहे हैं तो वो डॉट से प्रेजेंट होगा, और अगर हम आईडी देते हैं तो वो हैश से प्रेजेंट होता है CSS में. ओके, सो फॉर्म. अब हम div को करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड. ओके, सो हेयर 1 पिक्सल सॉलिड रेड इसने दिखा दिया है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर पे लाता हूँ, एट द सेंटर ऑफ पेज फ्रॉम द टॉप एंड द लेफ्ट. सो व्हाट वी हैव टू डू, पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स्ड. मैं पोजीशन फिक्स रखूँगा, टॉप से 50% मार्जिन होना चाहिए एंड लेफ्ट से भी 50%. सेव एंड चेकआउट. सी, टॉप से 50% नीचे आ चुका है और लेफ्ट से 50, बट हमें ये नहीं चाहिए. हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर पे दिखे पेज पे. सो व्हाट वी विल डू, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट -50% and see the magic. And what we want, justify content, center and text, align center. Check this out. And let's give a br tag here. Copy the code, paste, save, refresh, check it out. Let me give me padding 10 pixel is enough, I think so. Okay. Now let's style the input tags inside the form. So let me change this to button, and I will write sign up and remove this value for now. Okay, so what we have to do, we will write the form class के अंदर जो इनपुट टैग यूज़ हुए हैं उनकी हाइट हो जानी चाहिए 40 पिक्सल एंड विड्थ हो जानी चाहिए 98%. See the magic. And फॉर्म जो div टैग था उसकी विड्थ हो जानी चाहिए. तो इसकी विड्थ सेट करते हैं हम कि फॉर्म इसकी मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ हो जाए अप्रॉक्स 50%. सो ज़्यादा हो गई 30%. ओके, दैट्स इनफ. सो what we have done until now, we have created the registration form, email and password and one button. We have style, email and password input, लेकिन इसका लुक अभी वो नहीं आया जो हम चाहते हैं. सो व्हाट वी विल डू, इसकी हाइट हम कर देंगे 30 पिक्सल एंड लेट्स क्रिएट अ पैडिंग ऑफ इनपुट टैग 10 pixel. Oh, what padding does, see it, if you use padding क्या करेगा, वो हम चारों तरफ से कंटेनर के मार्जिन दे देगा बॉक्स का. सो
let me change something. 30% auto. Okay. Change to 45%, and width is equal to 70%. Cool. And let me change its height to 25 pixel. Nice. Now what we have to do, we have to change the border. That will be 1 pixel solid. I will create the DDD. Check this out, how nice and clean it looks. But when we click on this, that black line appears, so we have to get rid of this. So outline none. Refresh the page. When you click, अब कोई लाइन अपीयर नहीं हो रही है, आप जो मर्जी लिखना है लिखो. So we have created this till now. What we have to do, we have to design that sign up button. So same for sign up button. So form क्लास के अंदर जो बटन है उसका भी हम सेम रखेंगे. तो ये बन चुका है कुछ ऐसा. इसकी हमें हाइट देने की ज़रूरत नहीं है. सेव करेंगे. बटन अपीयर हो चुका है. डिफ़ॉल्ट कलर उसका ग्रे है. उसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे 416981. कॉपी द कलर. And we don't want border. Outline is okay. Cursor will be pointer. Why cursor will be pointer? Because when we hover, अभी जब हम होवर कर रहे हैं तो कोई कर्सर का लुक चेंज नहीं है. बट मैं रिफ्रेश करता हूँ जब पेज को. नाउ सी इट टर्न्स द पॉइंटर. इट यू गॉट इट. सो बॉर्डर none. Done. And I want the border radius in both of button, even on button. And border radius will be 5 pixel. Copy that and paste it to here. So the minor change there. So what we have to do next, padding should be 20 pixel, 40 pixel. Nice. So what we have to do, top से मैं इसको 40% कर देता हूँ. ठीक है. Let's change the body background. So body is a tag. Body is a tag. So we don't need to mention any dot and the hash for the tags. We can simply write the name. Okay. So the body background will be hash EEE, and the form background will be hash FFF. What the FFF is a pure white, and the hash EEE very lighter gray. You see the magic here. That's what I want to say. So border we have to change the red to hash EEE, and I want the border radius here too. So check this one. So let's add the box shadow. I want 0 pixel, 1 pixel, 13 pixel, 0 pixel, RGBA 0,0,0.35. काम करना चाहिए. Yes. So what we have done, we have created a registration form. We have input fields, we have button. Now what we have to do, we have to insert these values into our database. So open your localhost PHP MyAdmin. Just type localhost.
here this is PHP admin, just click on this, you will directly redirect to the PHP admin panel, C panel, you can say कुछ भी ले सकते हैं. So let me change this, मुझे ये पसंद नहीं आता. Okay, so let's create a database. So we have, so नया database बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करते हैं. डेटाबेस नेम पे आप कोई भी डेटाबेस डाल सकते हैं. मैं डालता हूँ यहाँ पे रजिस्टर डेटाबेस. वी हैव टू क्रिएट अ टेबल. सो क्रिएट टेबल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र्स का नाम देता हूँ. हमें कितनी इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ईमेल एंड पासवर्ड एंड 1 फॉर द सीरियल नंबर. तो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए बस, ठीक है. 1 for the ID, another for email and another for password. ID will be integer, email will be variable character, password will be variable character. We don't need to enter there, we need 50 is enough. Auto increment, because we want auto increment IDs, no need to enter any values. The primary, save. Let's check the users ID, email, password. So whenever we register from this page, email and password values should be added here and the ID will be auto increment. आईडी जो है अपने आप इंक्रीमेंट होते रहेगी 1 स्टेप, ठीक है. जैसे मैं अभी लॉगिन करूँगा, रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो अपने आप एक यूज़र ऐड होगा जिसकी आईडी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, और दूसरा यूज़र जब एंटर होगा ऑटोमेटिक उसकी आईडी 2 हो जाएगी. सो गो टू अवर फॉर्म, वी नीड टू टाइप, लेट्स क्रिएट अनदर फाइल फर्स्ट हियर, सेव इट एज register.php. okay, so form action will be goes to register.php. वैनेवर जब भी कोई फॉर्म भरा जाएगा तो वो सीधे उस फॉर्म को register.php पे लेके जाएगा और वहाँ चेक करेगा, ठीक है. सो वी नीड नेम, सो नेम विल बी ईमेल एंड हमें इसका भी नेम डालना पड़ेगा और उसका नाम होगा पासवर्ड. button type submit. okay, we have done. Let's create this. So first of all we have to connect our page to database. So what we have to do, let's start PHP $con is a variable. आप चाहो तो कोई और भी दे सकते हो, मुझे कौन चाहिए. MySQLi connect localhost the root directory, password is none and your database name. But for register, okay, register. okay, so we have done until this and लेट्स मूव टू रजिस्टर के. हम register.php चेक करते हैं पहले. रजिस्टर php है नथिंग है. ओके, सो लेट्स चेक अगर कि ये हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं. अगर कनेक्ट होता है तो प्रिंट कर देगा कनेक्टेड, एल्स नहीं तो प्रिंट करें not connected. सी क्या दिखा रहा, कनेक्ट दिखा रहा. अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी छेड़खानी करता हूँ, ये रजिस्टर था, मैंने रजिस्टर के आगे कुछ भी टाइप किया तो क्या दिखा रहा है, डेटाबेस और नॉट कनेक्टेड, ठीक है, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. सो इट इज़ कनेक्टेड. ओके, सो
When we hit submit button, it will redirect my form to register.php. So let's store those values. जो भी फॉर्म से वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र, उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. सो उस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा. पहला मैं बनाऊंगा ईमेल और दूसरा मैं बनाऊंगा PSWD पासवर्ड. ठीक है, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी. सो $_ p post द नेम ऑफ द इनपुट. सो यहाँ पे इसका नाम है ईमेल. कॉपी द कोड, पेस्ट इट हियर, एंड यहाँ इसका नाम था पासवर्ड. वन वी हैव टू डू वन मोर थिंग. फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू register.php एंड फॉर्म का मेथड जो होगा वो होगा पोस्ट, because we are using post method. So what we have to be, हमने अब वैल्यू स्टोर कर ली है. तो अब क्या करेंगे, अब हम क्वारीज चलाएंगे. सो क्वेरी विल बी लाइक इंसर्ट करेंगे कहाँ, रजिस्टर टेबल पे. सॉरी, रजिस्टर नहीं, यूज़र्स टेबल है. यूज़र से यूज़र है. Let me check users. Okay, let's back to our page. Insert into users. कौन कौन से कॉलम्स में इंसर्ट करना है, उसके ईमेल एंड पासवर्ड. अब ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे क्या है, दिस इज ईमेल और ईमेल. इंसर्ट इनटू यूजर्स और ईमेल और पासवर्ड, इन दो कॉलम्स पे हमें एंट्री करवानी है. तो इंसर्ट इनटू यूजर्स, ईमेल, पासवर्ड, VALUES वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ है हमारे पास. सो $email दिस वैल्यू एंड पासवर्ड. Done, and we have created the query. Now we have to run the query. So MySQLi query query $connection. It needs two variables. So first a connection and another one of the query. So this, and if अगर क्वेरी सक्सेस हो, सॉरी गलत जगह लगा दिया, आप लोग ऐसी गलती मत कर देना. सो अगर MySQL क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है तो इको कर दें, सॉरी प्रिंट कर दें रजिस्टर सक्सेस. एल्स नहीं तो एरर. ओके, सो गो टू योर पेज, रिफ्रेश इट, एंटर सम ईमेल, एंटर सम पासवर्ड 1111, साइन अप, कनेक्टेड, register success. Let's refresh this one. See, twister@gmail.com and password भी 1111 and ID is auto increment. ID हमने नहीं डाली, वो खुद से हुई है, बना चुकी है. ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टेड रजिस्टर एक्सेस दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये दिया हुआ था. इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, सो फिर से ट्विस्टर 1 2 3 डालते हैं. पासवर्ड मैं अब डालता हूँ 1 2 3 4 5 6. साइन अप, रजिस्टर सक्सेस, रिफ्रेश दिस. ID is 2 twister 1 2 3 @gmail.com 1 2 3 4 5 6.
So this is completed. Form looks good, works correctly. In next part we will learn how we will log in with this. Don't forget to subscribe the channel.